हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. So today I am starting with a new topic, that is a cell, the basic unit of life, which is very important and what you can say is the base of biology. As the name itself suggests, the basic unit of life. So without much ado, let's start with the chapter and let us understand how does this statement is justified. Okay, and why the cell is called the basic unit of life and what importance does it holds in human body and life. All right, so let us start first with the discovery. So like, who discovered the cell, how come he saw the cell, and what were the ideas which he put forward, right? So when we talk about the discovery of the cell, it was discovered by the scientist Robert Hooke in the year 1665. Alright, so in the year 1665, this scientist Robert Hooke, he used his microscope and he saw the cell in the bark of the tree. When he took a piece of that bark, he was able to see a structure which was resembling the structure of a honeycomb. This is the original image which he saw. So doesn't it resemble like this honeycomb? Right, just imagine that this is one cell. So he saw the structure and he said that the structure is resembling honeycomb, right? Then each cell seems to be hollow. See, each cell is hollow, एकदम खाली है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम खोखला दिख रहा है. So in Robert Hooke's language, something which is very small and hollow means empty, खाली, उसको बोलते हैं cellula. Okay, so in his language, cellula means something which is very small and hollow in structure, and hence from cellula the name cell was derived. All right. So now what is the importance of the cell? See, many cells group together to form what? Tissues. Many tissues group together to form organ. Many organs group together to form organ system, and many system when performed together they form organism. If I say you are an organism or I am an organism, so in our body there are several organ system functioning together, like a respiratory system, digestive system, circulatory system. So when I say system, so that means not a single organ is working for it. There are several organs working in coordination with each other so that that system can work with its 100% efficiency. Right, so this system is made up of several organs working together in coordination, and in turn these organs are made up of tissues. But the tissues are made up of what? They are made up of cell. तो सबका माई बाप कौन हुआ? Cell. Hence the statement that cell is the fundamental unit or the basic unit is justified. All right, agree? ठीक है. Then when you talk about types of cells, there are two types of cells. It is prokaryotic and eukaryotic. Pro means primitive, बहुत पुराना. Karyon is nucleus, पुराने nucleus वाला. Eu means new and karyon is again what? Nucleus, नए nucleus वाला. See, डिफरेंस और मीनिंग क्या है? पुराना न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस. द प्रोकैरियोटिक सेल आर, just see the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. What you are able to make out is this eukaryotic cell is highly modified, possesses different organelles for different function, and also these organelles are membranous organelle. What do you mean by membranous organelle? मतलब इन organelles को एक सेपरेट मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, कोटिंग है, प्राइवेसी है उनको अपना काम करने के लिए. ठीक है. और ऑर्गेनिल का मतलब क्या है? ऑर्गेनिल का मतलब है टाइनी ऑर्गेन.
सेल है इतना टाइनी और सेल का ऑर्गेन उससे भी टाइनी, तो ऑर्गेन का एकदम चिंटू वर्जन, एकदम छोटा वर्जन इज ऑर्गेनेल. All right, so see the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. You can see that there are no as such specialized different organelles, or you can say membranous organelle for the performance of different function, right? Also, this is a nucleus which basically controls the cell division thing and several reaction inside the cell, which is again not seen in the prokaryotic cell. So the mal material in a eukaryotic cell ka nucleus ka is protected by nuclear membrane, which is not seen again in prokaryotic cell. मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर का जो भी माल मसाला है वो सब ऐसे ही सस्पेंडेड है, ऐसे पूरा फैला हुआ है. कहाँ पर? पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे सेल में. ठीक है, ओके. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द सेल, सो लेट मी टेल यू दैट there is a huge variation in the shape and size of the cell. See, I'll just give you a simple example. We all know that कि सेल इतना छोटा होता है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, इतने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो सकता है. जैसे हम सब ने एग देखा है, खाया है ना. तो जो एग है वो भी तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. तो मतलब कि सेल इतना छोटा कि जो हमको आंखों से दिखाई भी ना दे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े, से लेकर इतना बड़ा कि हम उसको देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, इतना बड़ा एग हो सकता है. और अगर हम लोग ऑस्ट्रिच या ईमू बर्ड की बात करें तो उनका एग इज एज बिग एज 18 सेंटीमीटर. तो मतलब दिस इज द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द सेल. ठीक है. शेप की बात करें तो सेल का कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है. ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन हैं अगेन शेप में भी. फॉर एग्जाम्पल CRBC, WBC, प्लेटलेट्स, योर न्यूरॉन्स, देन डिफरेंट सेल का बैक्टीरियाज के सेल, रॉड शेप्ड, कॉकस, स्पाइरलस, दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर सिंगल सेल. See the huge variation again in the shape of the cell. All right. So there is a huge variation in shape and size of the cell. Cell इतना छोटा और उसके organelles उससे भी छोटे. Hence they are not referred to as organs of the cell but organelles of the cell, where the word organelles stand for tiny organ. ठीक है. Now let us discuss each organelle, okay, in detail. This is the cell structure, just for your instance, and how what is the difference between the animal cell and the plant cell. ये हम जब पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स देख लेंगे तो ये आप खुद ही कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर पाओगे. ठीक है. अच्छा, सेल के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले ज़रा सेल थियोरी पे एक नज़र डालते हैं. देखो, सेल की डिस्कवरी नो डाउट रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन द सेल थियोरी, द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द सेल वाज गिवन बाय 3 यंग मैन, स्क्लीरेन, शॉन एंड रुडोल्फ वर्चो. What did they say is they put forward 4 points in the cell theory. That is, the cell is the basic unit of life. ये तो हमने देखा कि क्यों बोलते हैं हम उसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्यों? क्योंकि सेल ही बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू बनाएंगे ऑर्गेन, ऑर्गेन बनाएंगे ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे ऑर्गेनिज्म. सो नो डाउट वी हैव टू एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल राइट. The second statement, every organism is made up of a cell. हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर है, बैक्टीरिया है, एल्गे है, फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, जो भी है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है. ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट लाइफ हमने फाउंड किया था अर्थ पे वो तो खुद एक सिंगल सेल था, अमीबा. तो बिना सेल के लाइफ के बारे में बात करने का सवाल ही नहीं आता है.
है ना। सो अगेन आंख बंद करके ये बात सही है कि हाँ, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। नाउ इधर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। अभी ऐसे बोलोगे मिस हम लोग तो इतने एडवांस एनिमल है, मैमल है, हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, तो हम कब थे सिंगल सेल? When were we of single cell? So let me tell you that we are an outcome of a sexual reproduction. All right. Sexual reproduction, where sperm, which is a single cell structure, male gamete fertilizes a female gamete, that is egg. Sperm is single celled, egg is single celled, both fuse together to form a zygote. Again a zygote is a single celled. जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो स्पर्म एग के अंदर समा जाता है, तो वो दोनों एक साथ, उनके जो मटेरियल है वो एक साथ एक सेल में होते हैं. So that is a single cell. And then a zygote forms embryo, embryo form different organs of the fetus and further on. So again we have to agree with this statement that we started our life from single cell, and that single cell was, that stage was this stage. क्या बोलते हो? Right? Then the fourth one is every new cell arises from the pre-existing one. See, new cell, you understood the meaning of new cell. What is the meaning of the pre-existing one? Pre मतलब पहले से, existing मतलब मौजूद, है ना, उसका होना. तो if I say you are made up of cell and day by day your body is growing, there is a need of a growth and repair in your body. Okay, so again let me tell you that the cells in your body continuously keeps on like dying, you can say. कोई भी सेल का जो लाइफ स्पैन है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है. हर एक सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है, 3 से 4 दिन का होता है, कुछ सेल्स का 120 डेज का होता है, कुछ सेल्स का 8 to 10 डेज होता है. उसके बाद वो मर जाते हैं. तो जब वो मर जाते हैं तो उनकी जगह भी तो कोई ना कोई सेल लेता होगा, रिप्लेस भी तो करना होता है. ठीक है, और आपका बॉडी बढ़ रहा है और आपका बॉडी सेल से बना हुआ है, तो नो डाउट सेल का नंबर भी तो बॉडी में बढ़ना चाहिए. गेटिंग में, समझ रहे हो? हाँ. तो उसके लिए ये जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है, ये सेल जब अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता है, these cells divide into 2 daughter cells, so which is important for the growth and repair and replacement in your body. Then again this cell will divide into 2 daughter cells. तो ऐसे कर करके सेल्स के नंबर भी बढ़ते हैं और जो डेड सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट भी होता है. तो ये सब तो न्यू सेल है, लेकिन ये न्यू सेल कैसे आते अगर ये पहले से मौजूद नहीं होता? तो ये दोनों न्यू सेल कैसे आते अगर ये नहीं होता? तो है ना. तो हर नया सेल किससे आएगा? जो पहले से प्रेजेंट है उस सेल से आएगा. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमको कबूल है. Right? Then let us start with the organelles one by one. So सबसे पहले देखेंगे the cell membrane. Now if I say this is a cell, so this outermost covering which distinguishes the cell from the external environment, which protects the cell. Okay, that thing is called the cell membrane. क्या करता है? यही बॉर्डर बनाया, यही सेल को उसकी पहचान देता है और सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है. एकदम सिंपल, ऐसे समझो आप लोग मैप देखते हो. ठीक है, मैप में कैसे रहता है कि यहाँ से यहाँ तक का ये गुजरात है, फिर ये महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे गोवा है. तो ऐसे जो बाउंड्रीज हम मैप में देखते हैं, एज सच ऐसा कोई बाउंड्री ज़मीन पे नहीं है.
है ना। लेकिन हम मैप में, इसलिए जब हम मैप में बाउंड्री देखते हैं तो वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश द स्टेट फ्रॉम ईच अदर, उनको एक अलग पहचान मिलती है। इन द सेम वे दिस सेल मेम्ब्रेन डिस्टिंग्विशेस द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समझ गए? ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। मतलब ये दिस इज द स्ट्रक्चर, ऐसा। इसको सर्कुलर को हमने ऐसे ओपन करके ऐसा रखा हुआ है। ये सेल का मेम्ब्रेन है और दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द सेल एंड दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेल। दिस पार्ट इज दिस वन एंड दिस पार्ट इज दिस वन। ओके, नाउ see, this is made up of a phospholipid bilayer membrane. Now, what is a phospholipid bilayer membrane? This head is made up of phosphate and this lollipop ka dhum is made up of lipid. This tail is made up of lipid. So this is a phosphate head with the lipid tail, together referred to as a phospholipid. ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो दो लेयर हो गए, hence referred to as a bilayer. Bi means bye नहीं, bi means two. ठीक है? So the cell membrane is made up of phospholipid bilayer membrane. Again, a very interesting thing about cell membrane is that they are semi-permeable in nature. Now, what do you mean by the term semi-permeable in nature? See, semi means half, permeable means to allow. मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, मैंने क्या बोला, ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है और वैसे ही ये चीज़ों को अंदर और बाहर आने में रेगुलेट भी करता है। मतलब जो भी चीज़ें, द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन, सेल के अंदर जिन चीज़ों का ज़रूरत है उनको बाहर से अंदर आने को अलाउ करता है। अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत वेस्ट जनरेट हो रहा है या किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, उसको अंदर से बाहर निकालना है, तो उसको अंदर से बाहर जाने में मदद करते हैं। ठीक है। सो अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सेमी परमेएबल? मीन्स दे आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। ज़रूरी चीज़ों का ही अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट होने देते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम खुल्लम खुल्ला है, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जिसको बाहर जाना है जाओ। ओके, कुछ भी अंदर आओ, कुछ भी बाहर जाओ, ऐसा नहीं है। तो दे आर हाईली चूजी, दे आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। ऑल राइट। Again, a very important point about the cell membrane is there are several theories given about the structure of the cell membrane, but the most latest and widely accepted theory का नाम है the fluid mosaic model, given by Singer and Dancer नहीं, Singer and Nicholson, नाम है Singer, okay? सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट जिन्होंने थियरी दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब देखते हैं क्या है ये ऐसा मॉडल जो वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, फटाफट समझाती हूँ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंपल बोलता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये रिजिड नहीं है। दीज आर समवॉट सेमी सॉलिड इन स्ट्रक्चर। और ये जो लॉलीपॉप आपको दिख रहा है फॉस्फोलिपिड, ये अपनी जगह पर कांस्टेंट नहीं है। दे कीप ऑन मूविंग, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर प्लेस। मतलब अगर ये यहाँ पर है तो ये यहीं पे है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओके, सो दिस इज द है बहुत डिटेल थियरी। मैं शॉर्ट में आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। ओके, so this was what fluid mosaic model, which states that a cell membrane is not the rigid structure but it is somewhat प्लाज्मा जैसा स्ट्रक्चर है उसका। और जो फॉस्फोलिपिड है दे आर नॉट कांस्टेंट एट वन प्लेस, रादर दे कीप ऑन रोटेटिंग, मूविंग, चेंजिंग देयर प्लेस। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये टर्म भी देख लेते हैं जाते जाते कि दिस
head is referred to as a hydrophilic head. Hydro means water, philic means loving. Okay, loving, or you can say having the affinity towards. Hydro means again water, and phobic means fearing. What is the importance of this water loving and water fearing thing together? See, as I told you that it is a semi-permeable membrane. Okay, so this semi-permeable membrane only allows gases to pass from outer part to the inner part without any obstacle. The other things which could pass it needs to be, what you can say, verified. Okay, so if we want water molecules to pass through it, the heavy water molecules, they can enter from here to here, but they cannot pass this region, as this region is hydrophobic in nature. What is hydrophobic? Water fearing. So it is fearing water, so it will not allow water to pass from it. Okay, so like water is there, sodium ions are there, chloride ions are there, potassium ions are there, so they cannot pass that easily from this extracellular side to intracellular side. So how do they pass? They pass using a special channels. Like this is a protein channel, which are also known as transporters. So there are specific transporters that pass specific ions or particles or substances through them. See, these are phospholipid bilayer, and these are the membranes, or you can say the protein channels, the transporters attached to it, which acts as a gateways for the different ions to pass. Alright, so this is how cell membrane is semi-permeable and protective in nature. Alright guys. Then the other organelle is a cytoplasm. See, the word cyto means cell, and plasm means something which is a jelly-like fluid. Okay, so if I say this is a cell, this full is a cell, and this is the cell membrane which we discussed just now. So inside this cell membrane, this a clear thing which you can see is nothing but the cytoplasm. Okay, and this cytoplasm is nothing but the jelly-like fluid matrix into which all the other organelles are suspended. Means ये सारे organelles इस cytoplasm में डूबे हुए हैं. ठीक है, तो for example, imagine that this cell membrane is the boundary of the swimming pool. This cytoplasm is the water in that swimming pool, and all these organelles are you and your friends enjoying in the swimming pool. In the same way, the cytoplasm is the water, like how water is to swimming pool, in the same way cytoplasm is to cell. Alright, then cyto आ ही गया तो बता दूँ, the detailed study of a cell is called cytology. As the word cyto means cell and logy means study, the detailed study of cell is called cytology. Alright, the other thing, cytoplasm में सिर्फ organelle suspended तो है ही, इसके अलावा इसमें बहुत सारे reactions होते हैं, और cytoplasm acts as a medium for transporting of a different substance from one organelle to other organelle. ठीक है, यहाँ से वहाँ मटेरियल्स भेजने के लिए साइटोप्लाज्म एक मीडियम जैसा भी काम करता है. ठीक है, ये सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस तो सेल का सेंटर होता है, वो सेल डिवीजन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल पता है ना, क्रोमोसोम, उसके अंदर डीएनए, उसके अंदर जीन्स, जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इसलिए हमारे अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. ऑलराइट, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है पूरा लिविंग मटेरियल, इसको हम रेफर करते हैं प्रोटोप्लाज्म. ये पूरा अंदर प्रोटोप्लाज्म है. प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस
इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के अंदर उसका जेली जैसा फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही फेमस ऑर्गेनेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसको बोला जाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? देखो, दिस इज द सेल, this what you can locate is a mitochondria. This is the magnified image of the mitochondria. This mitochondria is a double membranous structure. This is the outer membrane, this is the inner membrane. Outer membrane is straight, whereas the inner membrane is thrown into folds. These folds are called cristae. These folds are called cristae. Okay, now the question arises why the mitochondria is called as the powerhouse of the cell. Because whatever food you eat, the oxygen you inhale, this eaten food is oxidized by this oxygen in order to generate energy for your body. Plus waste is also generated which is exhaled by us. Alright, so this pura कार्यक्रम, this event take place inside the mitochondria. Hence, the energy generation of our body is done by mitochondria. If there were no mitochondria, कितना भी खाते, कितना भी inhale करते, energy generate नहीं हो पाती. Hence, the one which generates the energy is termed as the powerhouse, और हमारे बॉडी में वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया. Alright, so the different parts of the body possess different numbers of mitochondria according to the work performed by that particular organ or that particular part of the body. Right? Next is endoplasmic reticulum. See, what is endoplasmic reticulum? This is a nucleus. Nucleus को surrounding है endoplasmic reticulum. ठीक है? Now endoplasmic reticulum is of two types. See, if I write endoplasmic reticulum and I bifurcate it into smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. See, this the dotted part, the dots which you can see, this is a rough endoplasmic reticulum, and these part which are not dotted and appears to be smooth are smooth endoplasmic reticulum. Now the question arises what these dots are. These dots are nothing guys but these are granules, दानेदार substance. And ये granules किसके हैं? These are nothing but ribosome. These are nothing but ribosome, and these ribosome synthesizes protein. This ribosome synthesizes protein which is used by different parts of the body, the cell, etc. Okay, so what do we understand is endoplasmic reticulum is bifurcated into smooth and rough. Rough is rough because of the presence of ribosomes. Ribosomes are nothing but the granular thing that synthesizes what? Proteins. Smooth does not possess a ribosome and does not synthesize a protein, so it performs the work of detoxification. Alright, removal of toxic substances out of the cell. Okay. Then the other, see, we have to connect here now. We have to connect the endoplasmic reticulum and Golgi body here. This is Golgi body. This thing, this is the magnified image of it. This organelle is a Golgi body, also known as the central post office of the cell. Now, why the name central post office of the cell? See, the Golgi body, see, the endoplasmic reticulum synthesizes a protein. Those proteins are loaded in these vesicles. Now, what are these vesicles?
For example, just imagine that whenever you order anything from the e-commerce website like Amazon or Flipkart, so they deliver you that thing in a packed box, so that the thing which you have ordered is not hampered. Right. In the same way, endoplasmic reticulum का ribosome, who has synthesized the protein, is loaded in these vesicles. Okay, and these vesicles actually are the packing, प्रोटीन को पैक करके लेकर आ रहा है किसके पास, गोल्गी apparatus के पास. अब गोल्गी apparatus के पास एक एंट्री है और एक एग्जिट है. सिस फेस इज द एंट्री, ट्रांस फेस इज द एग्जिट. ऑलराइट, तो ये जो प्रोटीन लाया वो प्रोटीन क्या होगा, यहाँ से अंदर जाएगा और इसके बाद जो गोल्गी बॉडी है वो इसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा और इस पे एक एड्रेस टैग लगाएगा. हमने क्या देखा कि गोल्गी बॉडी को हम क्या कह रहे हैं, गोल्गी बॉडी को हम सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कह रहे हैं. तो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम का काम सिर्फ बनाने का था, अब उसको भेजना कहाँ है, उसको उसकी ज़रूरत बॉडी में कहाँ पर है, वो किसका काम है, गोल्गी apparatus का काम है. तो क्या होगा, उस पर एड्रेस टैग लगेगा. वैसे आजकल के ज़माने में तो हम लेटर्स नहीं पोस्ट करते, लेकिन जब हम पोस्ट किया करते थे तब सारे लेटर्स पोस्ट बॉक्स में से पोस्ट ऑफिस में जाते थे, जहाँ पर उनको सॉर्ट आउट किया जाता था डिफरेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से कि ये लेटर कहाँ का है, ये लेटर को किस तरफ भेजना है, कौन सी सिटी में भेजना है, कौन से विलेज में भेजना है. तो वैसे ही कुछ काम करता है गोल्गी apparatus. ठीक है, तो जब सिस फेस से एंटर होता है तो ये जो राइबोसोम ने बनाया हुआ ये वो प्रोटीन है, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर आता है तो वो एक मॉडिफाइड और एड्रेस टैग वाला प्रोटीन होता है. देखो, जो एंट्री हुआ था वो वेसिकल, और जब वो बाहर आ गया तो उसको फिर से गोल्गी बॉडी ने एक दूसरे वेसिकल में पैक किया है. सो यू कैन इजीली मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड द सिक्रेटरी वेसिकल. दिस वेसिकल द एंजाइम और द प्रोटीन इनटू इट कैन बी सिक्रेटेड. All right, hence this Golgi apparatus is called as central post office of the cell. Also, the Golgi apparatus was discovered by the scientist Sir Camillo Golgi. Hence, in his honor, the name Golgi Body or the Golgi apparatus, always remember, was discovered by the Sir Camillo Golgi. Next is the lysosome, referred to as a suicide bag. This is the cell, this is the lysosome, and this is the magnified image of the lysosome. Now again, let's justify why the name suicide bag. See, this lysosome is a single wall membrane, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे इसके पास एंजाइम हैं. The lysosome possesses more than 50 different types of enzymes which are highly acidic in nature, which are hydrolytic in nature, acidic in nature, and are capable of digesting different types of waste. मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रही हूँ, सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. रिएक्शंस डू जनरेट वेस्ट. तो वो वेस्ट को क्लियर करने के लिए जो लाइसोसोम है ये अपने अंदर एक 50 डिफरेंट टाइप्स के हाईली एसिडिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ताकि उन कचरे को क्या किया जाए, डाइजेस्ट किया जाए, जिससे क्या रहे, सेल एकदम क्लीन एंड क्लियर बना रहे. तो उसका मतलब सारे ही जो भी अचरा कचरा होता है वो लाइसोसोम में आके क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है. ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग. तो अभी तक हमने जो भी देखा वो सारे स्ट्रक्चर कॉमन थे एनिमल सेल और प्लांट सेल में. ठीक है, लेकिन जो प्लांट सेल है उनमें और भी कुछ एडिशनल ऑर्गेनेल्स है जो एनिमल सेल में नहीं है. सबसे पहला तो है सेल वॉल. जो प्लांट सेल है, देखो जो भी ट्रीज है वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है ना. कोई भी एनिमल इतना कड़क नहीं है, इतना रिजिड नहीं है जितना कि प्लांट होते हैं. सो दिस रिजिडिटी टू द प्लांट इज गिवन बाय दिस सेल वॉल.
जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या है, सेल वॉल है, जो प्लांट को, ट्रीज को क्या देता है, रिजिडिटी देता है। इसके अलावा उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक क्या है, ग्रीन कलर इम्पार्ट करने वाला पिगमेंट है, जो लीव्स को क्या करता है, ग्रीन कलर देता है। उस ग्रीन कलर के वजह से वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और पूरे यूनिवर्स को क्या करते हैं, जिलाते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ प्लांट सेल ही है जो ऑटोट्रोफिक है नेचर में, और इसके अलावा एक सी स्लग भी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। देन वैक्यूल, वैक्यूल मीन्स नथिंग बट द एम्प्टी स्पेस, खाली जगह को क्या कहते हैं, वैक्यूल। ये एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं या तो नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में तो ये डेफिनेटली होते हैं और बहुत बड़े होते हैं साइज में। इसे एम्प्टी स्पेस का काम क्या है, स्टोरेज, सेल सैप का स्टोरेज या वेस्ट का स्टोरेज, ये काम कौन करता है, वो वैक्यूल करता है। ऑलराइट, जो हमने डिस्कस किया पीछे क्लोरोप्लास्ट, ये उसका मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को। ये जो सेंट्रियोल आप देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन के टाइम विजिबल होता है, जिसका काम क्या है, सेल डिवीजन के दौरान मैं एक और वीडियो बनाऊंगी सेल डिवीजन का, तभी आप इस सेंट्रियोल के फंक्शन को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ध्यान रखें कि ये सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होता है और ये क्या करता है, क्रोमोसोम को पुल अपार्ट करके सेल को प्रॉपरली डिवाइड कराने में मदद करता है। ये प्लांट सेल के फीचर्स हैं, ये एनिमल सेल के फीचर्स हैं, और ये दोनों के जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन फीचर्स है। दिस वेन डायग्राम शोज द डिफरेंट salient features of plant cell as well as animal cell and the common features of both. Alright, so I hope this video was useful for you all. You all have understood the concept, basic concept of the cell. इसके अलावा भी there is any difficulty, any problem, kindly feel free to comment in the comment section. By the time, take care, stay home, stay safe. God bless you all.